Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today, the topic is two nation theory, दो कौमी नज़रिया. टू नेशन थ्योरी जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि नज़रिया पाकिस्तान असल में दो कौमी नज़रिया ही था, यानी नज़रिया इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान एक ही चीज़ थी. कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने इसमें अपने जो स्टेटमेंट्स थी वो भी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं. तो दो कौमी नज़रिया का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट दो कौमें रहती हैं, एक मुस्लिम और दूसरे नॉन मुस्लिम. जैसे कि ये हाईलाइट किया गया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैड डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड वेयर मुस्लिम्स कुड गेट देयर religious satisfaction. It's very clear that religious satisfaction means that they want to pass their life according to their own religion. So, actually, what the nation is, what's the basis of the nation? The Muslims believe that the basis of their nation is neither territorial nor ethnic, linguistic, rather, they are a nation because they belong to the same faith of Islam. मुसलमानों का जो नज़रिया है कौम का, वो ये नहीं है कि वो किसी एक इलाके के हैं या एक ज़बान बोलते हैं या एक कल्चर रखते हैं, बल्कि उनका नज़रिया जो कौम का है वो ये है कि वो एक मज़हब के पैरोकार है, और वो मज़हब कौन सा है? इस्लाम. इसलिए इसे एक अलग से वो अपने कौम, जहाँ पे भी इस्लाम को मानने वाले हैं वो एक ही कौम है. और इस नज़रिए को सबसे पहले सर सैयद ने फ्लोट किया था शुरू में. तो सर सैयद को पानियर कहते हैं. सबसे पहला जो दो कौमी नज़रिया था वो सर सैयद ने ही दिया था. सर सैयद अहमद खान इज़ द वन हु यूज्ड द वर्ड टू नेशन फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम वेरी फर्स्ट आफ्टर ही सा हेटेड ऑफ द हिंदूज एंड द कांग्रेस फॉर द मुस्लिम्स. जब सर सैयद ने देखा कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के बहुत मुखालिफ हैं और वो उनसे नफरत करते हैं, तो सर सैयद ने फर्स्ट टाइम ये नेशन का वर्ड यूज़ किया कि मुस्लिम्स एक अलग नेशन है और हिंदू एक अलग नेशन है. इसी तरह ये दो डिफरेंट नेशंस है. Likewise to nation theory and the views of Qaid Azam ने भी इस बारे में बताया, the Muslims are not minority, they are one nation by every definition of the word nation, by all canons of international law we are a nation. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कायद आज़म ने मुसलमानों के बारे में ये फरमाया था कि कोई भी दुनिया की डेफिनेशन ले लें, उसके लिहाज से हम एक अलग कौम है. अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी. उसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वही जो इलाहाबाद के एड्रेस में उन्होंने बताया था, अपना पाकिस्तान का नज़रिया दिया था, तसव्वुर पाकिस्तान दिया था, वो भी इसी बेस पे था, दो नेशन दो कौमी नज़रिए के ऊपर था. जैसे उनकी वो मशहूर स्टेटमेंट थी कि वुड लाइक टू सी पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान एंड सिंध अमलगमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट. कि ये सारी की सारी नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है ये एक अलग रियासत बनेगी, क्योंकि अलग कौम है और ये एक अलग जगह पे रहना चाहते हैं. So let's see what is the main points of the two nation theory. रिलीजियस डिफरेंसेस जैसा आप डिस्कस कर चुके हैं, पीछे भी आपको पता है, इसलिए आपको साथ साथ मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि पीछे कंटिन्यू इसको लेके चलेंगे कि पैदाइश से लेके मरने तक हर तरह के डिफरेंसेस हैं मुसलमानों के और हिंदुओं के. As it is written over there, the Hindus and the Muslims belong to different religions. Islam preaches Tawheed, oneness of Allah, and believes the equity of man before law. Muslims are the believers of God, the Holy Prophet, peace be upon him, and the Holy Book Quran, and hold a cohesive approach towards life. मुस्लिम्स वो हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, और वो ज़िंदगी की जो अप्रोच है वो हिंदुओं या दूसरी कौमों से बिल्कुल मुख्तलिफ है. Hinduism, on the other hand, is based on the concept of multiple gods. Their society follows a state system, is divided into four classes, and has a very narrow approach towards life. जबकि दूसरी तरफ हिंदू जो हैं वो कई खुदाओं को पूछते हैं, कई देवी देवताएं हैं उनकी. कभी आप सुनते होंगे मूवीज वगैरह में कोई काली माता है, पता नहीं क्या कुछ है उनका. तो उनके बहुत सारे गॉड्स हैं और उनके अप्रोच ऑफ लाइफ जो है वो भी डिफरेंट है. वहाँ कास्ट सिस्टम है, वहाँ चार बड़ी नस्लें हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, दलित है. तो मुसलमान इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमानों में ऐसा कोई नहीं है, सब बराबर है. और जैसा कि इस्लाम के अंदर तो बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह के नज़दीक सब बराबर है, सिर्फ वही बेहतर है जो मुत्तकी और परहेजगार है. Political differences क्या थे? The political differences between the Hindus and the Muslims have played an important role in the development of a evolution of the two nation theory. तो political differences भी इनमें बहुत ज़्यादा हैं. मुसलमान अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी नज़रियात, अपनी आइडियोलॉजी के साथ ज़िंदा रहते हैं, जबकि हिंदू के नज़रियात, उनकी सोच, उनका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है.
کلچر ڈفرینسز وہی جو میں بات کر رہا ہوں، کلچر ڈفرینسز میں ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، شرک سے توبہ کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کہ دوسری طرف ہندو جو ہیں وہ گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں، مدر کو کہتے ہیں اس کو، اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ابھی آج کل کے سینیریو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کرونا سے بچنے کے لیے بھی گائے کا جو یورین ہے وہ اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کا عجیب قسم کا نظریہ ہے جو مسلمانوں کے کلچر سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اسی طرح ان کے سوشل ڈفرینسز ہیں، ہمارے کھانے پینے کے آداب، ہمارے پہننے کے، اوڑھنے کے رسم و رواج، شادی بیاہ، ہر چیز ہماری ان سے مختلف ہے۔ اسی طرح اکنامک ڈفرینسز ہیں، اسلام بڑا واضح طور پر زکوٰۃ کے سسٹم پہ بیس کرتا ہے۔ اگر اس کے اوپر پوری طرح سے ایمفسائز کیا جائے تو اس سے بہترین نظام دنیا میں کوئی نہیں ہے، جبکہ ہندو جو ہیں وہ سود پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ آفٹر دا 1857 the Muslim economic was crushed and all trade policies were framed in such a way so that determined the Muslim condition, deteriorate the Muslim condition. They were thrown out of the government services and their states' properties were confiscated, while the Hindus were provided with many opportunity to progress economically. تو وہ کیونکہ 1857 کے بعد ہندو بہت کنی قوم ہے، یہ انگریز کے ساتھ انہوں نے ملی بھگت کر لی اور ان کے ساتھ مل گئے اور کہا کہ یہ سارا کچھ کیا ذرا مسلمانوں کا تھا 1857 کا، اس لیے مسلم پیچھے رہ گئے، ہندو جو وہ اکنامیکلی مضبوط ہو گئے۔ اسی طرح لینگویج کو پتہ ہے برٹش کے آنے سے پہلے یہاں مسلمس حکومت کر رہے تھے اور ان کی اپنی لینگویج تھی جس کو پرشین کہتے ہیں، پھر اردو ان کی زبان تھی۔ ہندی جو ہے یہ ان کی ہے، سنسکرت ہندو کی زبان ہے۔ جب یہ برٹش کے ساتھ ملے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اردو کو ریپلیس کر دیا جائے ہندی کے ساتھ۔ تو لینگویج کے ڈفرینس ہیں، کلچر کے ڈفرینس ہیں، اکنامک کے ڈفرینس ہیں، ہر لحاظ سے یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ So let's see at the end what's the conclusion of all this discussion of this topic is the Muslims apprehended that they would lose their identity if they remained a part of the Hindu society. They also came to realize the above mentioned differences between them and the Hindus and hence demand for a separate electorate on the ground that they were different nation from Hindus. مسلمس کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ اسی امبریلا میں رہے، ہندوؤں کے ڈومینیشن کے اندر رہیں تو ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے، جیسا کہ آپ آج کل کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کی جو پہچان ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا، قائد اعظم علامہ اقبال کی ایفرٹ کے ساتھ اور پوری ایک موومنٹ چلی، تو مسلمس نے یہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کیا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے، علیحدہ نیشن ہے، اس لیے ہم ایک الگ ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے دو نیشن، ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ۔